गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द एंड ऑफ चाइनाज 100 ईयर मैराथन एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ ब्लंट मिलिट्री। ये 100 ईयर मैराथन का सीरीज का 6th एपिसोड है और इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ हैं मिस्टर श्री अय्यर। श्री अय्यर जी, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट once again. Vanakkam. Namaskar, Namaskar, and a very hearty welcome to all our viewers in Ganeshwar channel as well as on P Guru's channel. We are beaming it live on both these channels. Wherever you are, do subscribe to the other channel. If you are on P Guru's, subscribe to Ganeshwar and vice versa. Thank you so much, sir. It's a pleasure and honor to be with you. Go ahead, sir. Yeah, thanks a lot. Or how have you felt about all the 5 episodes which we have done so far? Let me ask you Uh, that question first. General Ravi Shankar, this is, for those who are interested in actually learning about an adversary, I cannot see past this series because we have left no stone unturned, looked at China in many angles, in many ways, and we have analyzed it fairly extensively. Of course, there will be some things that could bear even more scrutiny. But if you want a wholesome idea of what China is, I think I would look at these 6 episodes. It's just a fantastic compilation, I must say, and including this one. This one will not be disappointed, viewers. Yeah. This is going to be good. In fact, I must सबको बताना चाहता हूँ, ये मैं लगातार चाइना के बारे में पढ़ता रहता हूँ, तो इसको एक तरीके से मैंने लगाया है ताकि चाइना के बारे में जो यू नो सोच विचार है और अपने दिमाग में जो अफवाहें हैं वो सब और वो पर्दा हटा सकते हैं। चाइना के जो वो पर्दे के पीछे जो असलियत है वो मैं बाहर लेके आना चाहता हूँ। ओके, सो विल स्टार्ट द होल Yes, sir. Yes, story. sir. I'll go Yeah. and then we'll have this thing. So we'll Right. start this about Yeah. 100-year marathon and the military, which is everyone worries about it. People don't know enough about it. बट उससे पहले कि मैं बताना चाहता हूँ, कल मैंने ये वीडियो किया था, इज देयर अ स्पाइक इन द प्रॉक्सी वॉर बाय पाकिस्तान। ये इसीलिए किया था क्योंकि कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले हमारे 2 ऑफिसर्स शहीद हो गए और उसके साथ 3 और बहुत अच्छे जवान हमारे एम्बुश में मारे गए अगेंस्ट पाकिस्तान। और यानी कि नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट, और वो हुआ कश्मीर में। और उससे पहले महीने में सितंबर में हमने एक कमांडिंग ऑफिसर भी खो दिया और एक डीएसपी भी खो दिया। इसीलिए हमने सोचा कि कुछ बात करना चाहिए। सो आई गॉट जनरल हसनैन, जनरल विनोद भाटिया एंड जनरल सतीश दुआ टू टॉक अबाउट दिस। इट इज वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स आई हैव डन ऑन ऑन स्ट्रेटेजिक अफेयर्स। आई वुड सजेस्ट दोज ऑफ यू आर इंटरेस्टेड, आप कृपया देखिए इन ऑन गनर शॉट। एक सवाल है, give me a link to General Shankar's channel by Atresh Segwal. You just go to YouTube, put Gunner Shot 9829 and you'll get it. Okay. And this is General Hasnain was GOC 15 Corps, Srinagar. General Dua was also GOC 15 Corps. He conducted the surgical strikes, the first surgical strikes. He was the mastermind of that. And General Vinod Bhatia was the Director General of Military Operations. And of course, I was also there. Uh, so you're going to get a very high-powered view about this. And everyone whom I've sent it to have said, we couldn't have got a better idea about what's happening in Kashmir at this point of time. So have a look at it. This is my first suggestion, right? In comparison, what we are going to do today is actually a pale shadow of what we did yesterday. But then that's a different story. Okay, like I've said, अभी तक जो मैं बता के आ रहा हूँ, जो पावर होता है चाइना के अंदर, वो ये 6 चीजों के ऊपर निर्भर है: डेमोग्राफी, आइडियोलॉजी, स्ट्रक्चरल इश्यूज ऑफ द इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज, जियोपॉलिटिकल शिफ्ट और मिलिट्री। हमने 5 के बारे में बात कर लिया। पहले हमने बात किया डेमोग्राफी के बारे में, जिसमें हमने देखा कि नेशन इज मेड ऑफ पीपल, लोगों से बनता है देश। और ये जो चाइना का वन चाइल्ड पॉलिसी है, इसमें क्या है कि चाइना का घाटा ही घाटा होगा। इट्स इररिवर्केबल डेमोग्राफिक डिक्लाइन।
और चाइना का पॉपुलेशन घट रहा है। अगर हमारे देश में दो लोग पैदा हो रहे हैं तो उनके इसमें एक ही पैदा हो रहा है, 50% से कम। तो ये इनका वर्किंग एज पॉपुलेशन कम हो रहा है और बर्थ रेट कम हो रहा है और इनका दे आर एजिंग एट द फास्टेस्ट रेट इन ह्यूमन हिस्ट्री। अगर आप ये यूएन के ग्राफ्स हैं, अगर आप देखेंगे कि एक ही मेट्रिक ऊपर जा रहा है, वो ही ओल्ड एज पॉपुलेशन, यानी कि ये देश बुढ़ा होता जा रहा है। जैसे आजकल जापान बुढ़ा हो गया, ये भी हो रहा है बुढ़ा। पर फर्क ये है कि जापान बिकेम rich before it got old, and China is going to get old before it gets rich. As a result, it will never be rich. और ये मेरा कहना नहीं है, ये सब बोल रहे हैं दुनिया में, वो खुद बोल रहे हैं। देन वी स्पोक ऑफ आइडियोलॉजी। क्यों? ये देश जो है एक आइडियोलॉजिकल देश है और ये पहले जमाने में इट ग्रू एस्ट्रोनॉमिकली इन द पोस्ट माओ एरा, बट इट वाज लूजिंग कंट्रोल, राइट? सो जी जिनपिंग ने क्या किया? He wanted to restore party control. He eradicated all centers of political power. In today, political power trumps economic power in China because of their ideology कि सत्ता ना छूटे। और सिक्योरिटी लॉस जो है वो इंपॉर्टेंट हो गए, मिलिट्री इंपॉर्टेंट हो गया। कि जब तक जी जिनपिंग पावर में रहेगा ये स्थिति बदली नहीं होगा कि चाइना का इकोनॉमी सुधर नहीं सकता। ओके, फिर हमने देखा इनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें देखा हमने कि इनका मैन्युफैक्चरिंग ठप हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट भी ठप हो गया, एक्सपोर्ट्स डाउन है आज के दिन, सर्विसेज सेक्टर इनका इज अंडर डेवलप्ड, कंजम्पशन हो नहीं रहा क्योंकि चाइना के लोगों का वेतन कम हो गए, इनका कमोडिटीज इंपोर्ट कम हो गया, वो भी कम हो गया, राइट? और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर अच्छा था, ये जी जिनपिंग ने बिल्कुल तोड़ दिया उसको। जब जैकमा और वगैरह का ही सैक जैकमा एंड अदर्स, टेंसेंट, दीदी चक्सिंग, इन सबको फिनिश कर दिया। तो चाइना का इकोनॉमी स्ट्रक्चरली इज टुडे गॉन। एंड देन वी स्पोक ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जो है ये सबके लिए लागू है, हमारे लिए लागू है, ये अमेरिका के लिए लागू है, यूरोप के लिए लागू है और इंडिया के लिए लागू है और चाइना के लिए लागू है। पर चाइना में स्थिति अलग है। अब ये पढ़िए, ड्राउट्स एंड फ्लड्स हैव बीन एंडेमिक टू चाइना फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। चाइनीज डायनास्टीज हैव कोलैप्स्ड ड्यू टू ड्राउट, फैमिन्स एंड फ्लड्स। अभी हाल ही में इनके ड्राउट और फ्लड हुए, पिछले साल, इस साल फ्लड्स हुए थे, पर साल ड्राउट हुआ था। They have been most extensive and most damaging. All this will impact their food security, energy, and overall development. Right? Then, last on 24th, we saw the geopolitical splits. इनके साथ कोई रहने के लिए, संबंध रखने के लिए भी हिचकिचा रहे हैं चाइना के साथ। इनका इंटरनल आइसोलेशन है, एक्सटर्नल आइसोलेशन है, इनके ग्लोबल इनिशिएटिव सब दे आर ऑल हेजिमोनिक इन नेचर। इनका एक्सटर्नल हेजिमोनी है इन साउथ चाइना सी, अरुणाचल वगैरह, ये सबके जगह हड़पना चाहते हैं। देन देयर इज कंपटीशन विद यूएसए, सबको बीआरआई में डेट ट्रैप में लगाना चाहते हैं, जिसके वजह से जितने ग्लोबल साउथ है इनके विरुद्ध है। हालांकि इनके आदि हैं, दे आर ऑल अंडर डेडिकेटेड टू देम एंड स्टक टू देम, बट दे आर अगेंस्ट देम। एंड देन देयर रोल इन कॉन्फ्लिक्ट्स, आप देखिए चाहे यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो या हमास का कॉन्फ्लिक्ट हो, दे हैव बीन साइडलाइन, कोई इनका कोई मायना ही नहीं है। और ट्रस्ट, विश्वास, ट्रस्ट इज नॉट देयर इन चाइना। चाइना ने अपना विश्वास खो दिया है। सो देयर इज ह्यूज जियोपॉलिटिकल स्प्लिट। अगर आप देखेंगे तो ये पांचों चीज, यानी कि डेमोग्राफी, इकोनॉमी, क्लाइमेट, राइट, और जियोपॉलिटिकल स्प्लिट, ये सब देखिए, इट हैज denuded China's overall power. And the last bastion of China's power is military. और उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ओके, आज हम बात करेंगे मिलिट्री के बारे में। और इस मिलिट्री में बात करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब टू गाना शॉट एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू पी गुरुस।
क्योंकि आई एम थैंकफुल टू श्री अय्यर जी टू गिव मी दिस चांस टू ऑल्सो रीच आउट टू पी गुरु सब्सक्राइबर्स। आप चाहे वहां देखे यहाँ देखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप दोनों चैनल्स में सब्सक्राइब करेंगे तो दोनों के लिए फायदा होगा और आपके लिए भी फायदा होगा। क्योंकि जब एक जॉइंट ब्रॉडकास्ट नहीं है, you can choose what you want. You get a bigger bouquet to choose from, right? And mine is, of course, mostly a geopolitical and defense related thing, and with a lot of technology thrown in. Okay, military. अभी हम बात करेंगे मिलिट्री। जी जिनपिंग इज बेटिंग ऑन मिलिट्री टू डिलीवर गुड्स फॉर चाइना। देखिए, पीएलए जो है इसका ग्लोबल एनफोर्सर है टू एस्टैब्लिश अ साइनोसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर, और इसका जो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन के अगेंस्ट टू रीक रिवेंज। ये दो चीज सबको पता होना चाहिए। और जी जिनपिंग का मानना है कि जब तक उसके पास एक शक्तिशाली मिलिट्री है, वो दुनिया के ऊपर हावी हो सकता है, एंड ही कैन रिमूव यूएसए फ्रॉम द नंबर वन सीट एंड चाइना बिकम्स द नंबर वन ग्लोबल पावर इन द वर्ल्ड। पर क्या ये हो सकता है? ये बहुत कारणों की वजह से नहीं हो सकता। पर एक और चीज है, चाइना's फोकस एंड वन गोल इज ताइवान। ये इनका स्टेटेड स्टांस है। पर द अनस्टेटेड स्टांस इज आल्सो अरुणाचल, इज आल्सो लद्दाख, इज इंडिया। वो अगेंस्ट इंडिया इसीलिए है कि उनको पता है कि अगर कोई देश इनको हरा सकता है तो सिर्फ इंडिया है एशिया के अंदर। देखिए, बात यह है कि चाइना has two peer competitors when it comes to the military who can handle China. And this is one point I would like a little view of yours also, Sri Ayerji. The size of China is counterbalanced by USA's force and India. ये दो ही देश हैं। तो अगर ये, और USA is far away, whereas China shares a 3,000 plus kilometer border with India. कोई हरा सकता है चाइना को, वो सिर्फ इंडिया। योर व्यूज। धन्यवाद जनरल रविशंकर जी। तो दोस्तों, हम दो चीज देखने वाले हैं, इनकी शक्तियां क्या है और इनके वीकनेसेस क्या है, कहां पर ये कमजोर है, ये भी हम देखेंगे। पहले मैं शक्तियों के बारे में दो तीन चीज बोलूंगा। जनरल रविशंकर जी मुझसे ज्यादा जानते हैं ये सब टेक्नोलॉजी और डिफेंस और मिलिट्री के बारे में है। दो चीज चाइना जो बोलता है कि मेरे पास है, दिस इज लाइक द दीवा डायलॉग, मेरे पास है। सो मेरे पास ईएमपी है और मेरे पास हाइपरसोनिक है। ये दो चीज ये लोग बोलते आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमने टेस्ट भी किया है। माना जाता है कि 2012 में ऑन द हाई सीज, यानी कि पैसिफिक ओशन के अंदर कहीं एक क्रूज चल रहा था। क्रूज का मतलब ये है कि 2000 लोग, आप जैसे मैं जैसे आम आदमी लोग, वेकेशन करते हैं शिप पर। तो इस शिप को एक ईएमपी पल्स ने उस पर मारकर उस शिप की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स को खराब कर दिया। तो आप देखिए, जहाज है कहीं समुद्र में और वहां पर 3000 लोग अटक गए हैं, और जो भी कुछ भी करे ये लोग, तो शुरू नहीं हो रहा था वो क्रूजर। तो हर व्यक्ति को हेलीकॉप्टर के यूज से वहां से उनको मेनलैंड लाना पड़ा। ये किसने किया था? ये बहुत शक हो रहा था, क्या रशिया ने किया था, क्या चाइना ने किया था? तो अब वो एक उसके बारे में थोड़ा सा जनरल रविशंकर उसको टच कर सकते हैं। अब तक पहली बार हम ईएमपी के बारे में जनरल रविशंकर के पास पूछ रहा हूं मैं ये। और दूसरा, जो हाइपरसोनिक की शक्ति जो ये बोल रहे हैं कि हमारे पास ये है, तो सर जी, ये दोनों इनके स्ट्रेंथ्स हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि रॉकेट फोर्स का जो है वो सब यही है। ओवर टू यू सर। पहले बात है कि कोई एक, देयर इज नॉट अ सिंगल one equipment or one weapon which will win the war. It doesn't denote Shakti. Hypersonic है, but it is not a fully deployable one. और एक hypersonic weapon system can only take on one target. So we should not get worried. One weapon system will not win the war. One EMP will not win the war. You have to take a broad range of activities before you pass a judgment on this. But as I said,
इट्स ओनली इंडिया एंड यूएसए विच कैन काउंटर चाइना मिलिटरली, बाकी सब मुश्किल है। बाकी सारे देश चाहते हैं कि इंडिया या यूएसए उनके साथ हो, खड़ा होने के लिए, राइट? ओके, नाउ ये भी है बात इनका कि दैट पीएलए विल शो नो मर्सी अगेंस्ट ताइवान। ये इनका टॉप जनरल है, ये यू नो Zhang Yuxia, who is the deputy CMC chairman, number 2 after Xi Jinping, he says, but that ये बोलते रहते हैं क्योंकि इनका फोकस दुनिया के लिए ताइवान है, पर पीछे पीछे इट इज ऑल्सो इंडिया। पर मेजर थिंग, जो क्रक्स ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टुडे इज लाइज इन दिस। चाइना हैज 5 न्यूज, नया, दे हैव नया सोल्जर्स, नया लीडर्स, नया इक्विपमेंट, नया ऑर्गेनाइजेशन, नया रोल्स। अगर आप ये 5 चीज अगर हम समझ लेंगे तो मान लो ये पूरा आज का समझ में आ गया। मैं ये भी बताना चाहता हूं, राइट, कि लोग बोल रहे हैं क्यों वी कीप टॉकिंग कि चाइना कोलैप्स होगा, ये होगा, वो होगा, वी आर ओवर एस्टिमेटिंग दिस एंड वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट चाइना। मैं चाइना को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं। China and PLA's military is still a formidable force. मैं सिर्फ ये बता रहा हूं आप लोगों को, we can take it on first, and second, it can be defeated, and third, China's military does not have the power which we think it has. So overall, I'm not going to say China is going to collapse. China is not going to collapse. China will remain. It will trouble a lot of us, but it will not be the kind of power that it is. That is, having said that, let's understand each one of them. China has new soldiers. First point जो मैंने बताया है कि it has got new soldiers. चाइना में क्या है कि conscription होता है, right? 2 साल का conscription होता है, तो लोग आते हैं, 2 साल सर्व करते हैं और चले जाते हैं। तो ये 2 साल कहाँ सर्व करते हैं? जो भी नए लड़के आते हैं कोई सी फोर्स के अंदर, ठीक, और ये जो जाते हैं एट द लोएस्ट लेवल्स टू द यूनिट्स, right? The more experienced people are at headquarters and they are handling complicated equipment, but at the lowest level they are all new soldiers, and every year these soldiers are changing over. In fact, they're changing over every 6 months. Yeah, that's what I was going to say. Every Yeah. 6 months they keep changing over. आप सोचिए अगर आपके घर के अंदर, and the new soldiers comprise at least 33% of China's army. आप सोचिए अगर हर 2 साल के अंदर 33% of your workforce in any organization you serve changes, इसका एफिकेसी क्या होगा? आप थोड़ा सोचिए, ठीक? और अगर that efficacy, and if those soldiers are your foot soldiers, what will happen? In a sales force, if your salesmen are changed 30% every year, what will happen to that sales force? Same problem China has. And these guys who are coming cannot handle the sophisticated equipment which China is inducting regularly. हम सोचते हैं ईएमपी ऑपरेट करने के लिए दिमाग चाहिए. See, China has a problem in that, and China is not getting enough people, educated people who can handle this complicated equipment. कोई नहीं आ रहा इनके, क्योंकि जो एजुकेटेड और इंटेलिजेंट पीपल हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, वो फौज में आना नहीं चाहते. So they are new soldiers who can't handle most of the items. Second point, new leaders, right? अभी आप देखिए चाइना का जो लीडरशिप है, वो आज के दिन इनके पास डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं है, वो तो सैक हो गया. अब सोचो अगर हर दूसरा दिन in your defense minister, if the secretary of defense of USA is changed every 2-3 months, or for that matter the defense minister of India is changed, what will be the state of India's defense? और जब से जी जिनपिंग आया है ये लीडर्स को बदली करता ही रहा है, और पिछले 3-4 साल में 2 चाइना के डिफेंस मिनिस्टर को हटा दिया गया, just been sacked. ओके, इनका जो
पीएलए का रॉकेट फोर्स विच इज द मोस्ट स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम, जैसे आपने बताया हाइपरसोनिक ये वो वगैरह उनके पास होता है, उनका चीफ को हटाया दिया गया, उनके टॉप लीडरशिप को पूरा निकाल दिया गया, right? And it has been changed by leadership which is actually doesn't have any idea about the rocket force. एक funny चीज है. So you don't have leadership, and their complete PLA has been told officially that you are under watch and they have been subjected to corruption and purges. और ये अभी नहीं, पिछले 10 साल से हो रहा है. अगर जो नहीं जानते नहीं है तो पक्का हो रहा है ये. तो मान के चलिए 4-5 दिन के बाद हाल ही में एक आर्टिकल लिख रहा हूँ इसी के बारे में. ये मैं यूरेशियन टाइम्स में मैं पब्लिश भी करूंगा, आपको लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं, या गना शॉट में भी मैं आउट करूंगा, इसको देख सकते हैं. सो यू हैव अ सिस्टम. अच्छा, एक और चीज, इनके ये नेवी इनका सबसे ज्यादा एक्सपैंड हो रहा है, और इनके जो एक्सपैंड होते हुए शिप्स के पास, इनके पास क्या कैप्टन्स नहीं है. और ये खुद बताते हैं, ये मेरी बात है नहीं है, ये पीएलए डेली का व्याख्या है कि दे डोंट हैव कैप्टन्स फॉर देयर शिप्स. सो व्हाट इज दिस फोर्स which has new leader, new soldiers and new leaders. ठीक. अच्छा, तीसरी पॉइंट देखते हैं. तीसरा पॉइंट है नया इक्विपमेंट. हम सब बोल रहे हैं कि भाई देखिए, चाइना के पास ये नया मिसाइल है, चाइना के पास ये नया एयरक्राफ्ट कैरियर है, चाइना के पास ये नया हवाई जहाज है, नया गन है, सब कुछ नया है पाकिस्तान चाइना के अंदर. What happens if your entire house is new? Just think, what will you do when you enter a new house? You won't know where the water is coming from. You don't know where the electricity is coming from. It takes you 1 year to settle into that new house to know कि भाई ये मेरा घर है कि नहीं. अगर किसी दिन बिजली चला गया और आप रात में एक नया घर में अगर उठ गए, या जहां भी नया जगह आप गए, आप बिस्तर से उठ गए, तो आप जाके दरवाजे टकराओगे बाथरूम जाने के बजाय. ये नॉर्मल है. So if everything in your equipment is new, you have a problem. And what's more, this is all costly equipment, and it has not gone through good quality. Just about 1 month back, the same Zhang Yuxia, he took a conference, 2-day conference of all the producers in China after sacking a few guys that their quality is poor. There is corruption in procurement. So if and internationally, all those people to whom China has, given arms, like Myanmar, Pakistan, Tanzania, all these countries, they're all saying Chinese equipment doesn't function well. और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो बोल रहे हैं. Okay, these are substandard equipment. So all your new equipment is untested in battle and substandard. तो अभी देखिए, नया आदमी, नया लीडर, नया इक्विपमेंट का क्या हाल होगा आपका. के चौथा पॉइंट. ओके, चौथा पॉइंट देखिए. I'll talk of new organization later. I'll talk of first new roles. New roles are important because ये नए सोल्जर, नए लीडर और नए इक्विपमेंट के साथ पीएलए को एक नया रोल दिया गया है. हिस्टोरिकली हमें पता है इंडिया में, इंडियन आर्मी और इंडियन आर्म फोर्सेस का रोल क्या था. इंडियन आर्म फोर्सेस का रोल ये था कि सरहद को बचाओ, अपना तटवर्ती इलाके को बचाओ, आइलैंड टेरिटरीज को बचाओ. और इस रोल के लिए आर्म फोर्सेस हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड. और इस रोल में हम लड़खड़ाए नहीं. वी हैव ऑलवेज डन द नीडफुल. Whereas today we are looking at capability enhancement to be a regional power in the IOR, Indian Ocean region, and to dominate the oceans, and to be a net security provider in Indian Ocean. Which means, इसका मतलब ये है कि हमारा सोच विचार बदली होने की जरूरत है. रोल एनहांसमेंट. उसी तरीके से पीएलए का देखिए, पीएलए का भी नया रोल है. क्या नया रोल है? ग्लोबल सुप्रीमेसी.
पहले तो अभी तक उनका रोल था कि चाइना को बचाओ, अभी रीजनल डोमिनेंस और इंटरनेशनल डोमिनेंस. सो देयर इज अ ह्यूज न्यू रोल. एंड दी ये जो ऐसे जो रोल है ना, एक दो दिन में नहीं होते. इट टुक ब्रिटेन. हमने जब सुपर पावर्स के बारे में बात किया था, अगर याद है श्री अय्यर जी, कि ब्रिटेन को कितने दिन लगा सुपर पावर बनने में? एक सेंचुरी लगा. Right. राइट. उसी तरीके से अमेरिका स्टार्टेड जर्नी टू बी अ सुपर पावर बिफोर द डिप्रेशन, आफ्टर एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एंड इट एक्चुअली बिकेम अ सुपर पावर समवेयर इन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. 40-50 साल लगा है. ये सिर्फ अभी 5-6 साल 10 साल से ही ये काब देख रहे हैं कि हम सुपर पावर स्टेटस में आएंगे, पर इनका काबिलियत है ही नहीं. A new role without capability. So now we are talking new soldiers, new leaders, new equipment, new role. Okay, पांचवा चीज इसी के साथ जुड़ा हुआ है. अगर आपका न्यू रोल है तो नए ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं. ठीक है, नए ऑर्गेनाइजेशंस चाहिए आपको न्यू रोल के लिए. तो कहीं नया थिएटर कमांड बन रहा है, कोई रॉकेट फोर्स बन रहा है, कोई स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स बन रहा है. राइट. हर दिन आप पढ़ोगे चाइना के बारे में न्यूज, कोई नया ही चीज है. सब कुछ नया है चाइना के अंदर. एक नया ईएमपी है, नया क्या बोलते हो उसको, हाइपरसोनिक मिसाइल है, कोई नया एयरक्राफ्ट कैरियर है. सब कुछ नया है, नया रोल है, नया ऑर्गेनाइजेशन है, नया सब कुछ नया है. एवरीथिंग न्यू कैनॉट बी. एंड कोई एक कॉन्सेप्ट इनका ऐसा नहीं है विच इज बीन टेस्टेड इन बैटल. राइट. तो एंड जैसे जैसे आप दूर अपने इलाके में जाओगे तो एक और चीज है, यू विल एनकाउंटर न्यू बैटलफील्ड्स इन विच यू नेवर फॉट. एक चीज है, वही है ना, गले का कुत्ता शेर होता है. सब बोलते हैं गले का कुत्ता शेर होता है. तो अगर आप अपने घर में बैठे रहोगे, आपके इलाके में बैठे रहोगे, उसको डिफेंड करना है तो आप शेर हो. पर अगर हमें दूर जाके ग्लोबल सुप्रीमेसी कायम करना है तो आप शेर नहीं बन सकते ओवरनाइट. न्यू बैटलफील्ड के पास गए आप. यू आर इन अ न्यू बैटलफील्ड. इफ चाइना हैज टू एंटर इंडियन ओशन रीजन, इट इज इन अ न्यू बैटलफील्ड. इफ इट हैज टू डोमिनेट थिंग, इट हैज टू सप्रेस द इंडियन नेवी, इट हैज टू सप्रेस यूएस नेवी विच इज बेस्ड इन डिगो गार्शिया. क्या इसके साथ इसके काबिलियत है? जैसे मैंने बोला, चाइना शेर है अपने गले में, अपने गली में. वो अपना गली का है साउथ चाइना सी, शेर है वहां. और उसके बाहर शेर नहीं है. तो अगर आप ये सब देखोगे, नया लीडरशिप, नया सोल्जर्स, राइट, नया रोल, नया इक्विपमेंट, नया ऑर्गेनाइजेशन और नया बैटलफील्ड. ये छठा, जैसे मैं बात कर रहा हूं मेरे दिमाग में इनके एक छठा प्रॉब्लम भी है. हाउ कैन इट बी अ ग्रेट पावर? आप हो बड़े कुत्ते, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर दूसरे के गली गली में जाके उस कुत्ते के साथ आप लड़ना चाहते हो जो शेर है वहां. क्या हो सकता है ये? बहुत मुश्किल है. ओके, राइट. नाउ इसका कुछ आई विल शो यू अ फ्यू यू नो व्यूज अबाउट ऑल दिस फ्रॉम द चाइनीज मीडिया एंड देन विल डिस्कस. ओके, आप देखिए. As per one view, Z is building a modern and world-class military in tight timelines. इतने टाइमलाइन में ये बनता नहीं है. देखिए, बच्चा पैदा करने के लिए आपको 9 महीने चाहिए. अगर आप उस 7 महीने में बच्चा पैदा हो गया तो वो प्रीमेच्योर है. और चाइना में ये हो रहा है, उसका मिलिट्री जो है प्रीमेच्योरली इट्स बीइंग बोर्न फॉर इट्स रोल. देयर हैव बीन मैसिव डिफेंस आउटलेट्स व्हिच आर द नॉर्म इन चाइना, एंड इट हैज गॉट अ एम्बिशियस सिविल मिलिट्री फ्यूजन स्ट्रेटजी. Right, military civil fusion strategy. Costly high-tech defense equipment being inducted into the PLA. I've already said so. Low quality, lack of standards, suspicion that Chinese weaponry is battle untested. It might not meet the bill in conflict situations. This is the international opinion. It has never been seen in battle.
It is poorly led and managed. Two successive defense ministers have been purged. ये सब हमने बात कर लिया. Okay. Unreliable high-tech military equipment and poor leadership invariably results in low operability, high maintenance costs, reduced operational cycles, and high replacement costs. क्योंकि एक नवसिखिया को अगर आप एक हथियार दे दोगे या आपका गाड़ी दे दो, आपका बच्चा है, नया है, अभी सीख रहा है गाड़ी, आप उसके हाथ में लैम्बोर्गिनी बना के दे दीजिए या मैसेरेटी खरीद के दे दीजिए, उसको क्या हाल होगा? वो एक दिन में वो एक he'll ram into a tree और वो मैसेरेटी will become half मैसेरेटी by 2 or Lamborghini by 2 or Ferrari by 2. ठीक? So that will be this thing, and this is compounded by systemic corruption. Now, the next thing which one has to understand, PLA is one of the largest forces in the world and with the least amount of battle experience. It has not fought a war from 1979. All this means what? There's a disproportionate load on the economy which will increase with time. क्या इनका economy इसको सह पाएगा? क्यों? इसको economy वैसे भी डूब रहा है. हमने बात कर लिया. It is on the decline. Okay, you don't want to hear me, read End of an Economic Miracle by Adam Posen in Foreign Affairs. I think which is one of the best articles in recent times about China's economy. And उसके videos देखिए, 2-4 videos हैं by Foreign Affairs only. You'll know. Right? Now, China is in a trap and it is not going to get out of this. इनका military बिल्कुल इसके बाहर नहीं जाएगा. ठीक? ओके. नेक्स्ट देखिए, ये चाइना का रिपोर्ट है जो मैंने पहले भी बताया. Chinese Navy tries to address pilot shortage by widening recruitment drive to postgraduates. पर कोई आ नहीं रहा. ठीक है? ओके. Right. Chinese military issues unprecedented rules for top commanders, social lives in move not tried even in Mao Zedong's times. The new set of rules control social activities of serving and retired senior officers. What does it set out? It sets out a code of conduct for dealing with Communist Party officials, government bodies, state-owned enterprises, social organizations, media, academic and research bodies, ethnic minority and religious groups, foreign institutions and family members, as well as people they meet online. ये देखिए, such things were never posed on me also by India. I was free to do many things. तभी तरक्की हुआ आर्टिलरी के अंदर. New rules which target leading cadres of the military would be applied to retired generals who are not known to wield considerable influence over the younger leaders. बोलिए. General Ravi Shankar, if you could go to the previous slide, sir. इससे पहला एक और. Yeah. So one question that जो एक प्रश्न जो मेरे मन में आता है सर जी, अब देखिए अगर आप चीन को देखते हैं तो ये बहुत ही बड़ा देश है, इसको लैंड की जरूरत नहीं है, तो फिर अगर आपको और जमीन की जरूरत नहीं है तो फिर क्यों इतना बड़ा मिलिट्री बनाकर रखा है? इसकी क्या वजह है? Yeah, very fundamental question you ask. इसका वजह बड़ा सिंपल है. अगर आपके इनके पास मिलिट्री नहीं है तो सुपर पावर नहीं बन सकता. और चाइना वांट्स टू बिकम अ सुपर पावर. यही है 100-year marathon. If you read that book, China's 100-year marathon, it is all about achieving superpower status. और ये आज का इनका सोच नहीं है, डेंग जियाओपिंग का सोच था, उसके बाद जियांग जेमिन का सोच था, राइट? सबका सोच था. सर जी, हम अभी तक इनके विफलता, सॉरी गो अहेड सर, आई थॉट यू आर डन. या प्लीज गो अहेड. नहीं, हमने अब तक इनकी विफलताओं के बारे में, सफलताओं के बारे में नहीं, विफलताओं के बारे में हमने अब तक बात भी नहीं किया है. एक सबमरीन पनडुब्बी डूबा, अभी 2 दिन पहले एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जहाज वो जल गया है, पता नहीं क्या हुआ है उसको. और अब S-300 जो पाकिस्तान को दिया गया था, वो हमारा जो मिसफायर्ड ब्रह्मोस था उसको भी वो रोक नहीं सका. समझिए वो मिसफायर था. मैं समझता हूँ या और कुछ था. भारत
चाइना जो को भी है, दिखाना या आई चाहता एग्री था विद कि यू, देखो तुम्हारा डब्बा है, व्हाटएवर। या तो दे हैव प्रॉब्लम। तो देखिए, ये बात आपने बहुत अच्छा बात बताया, क्योंकि हर बार वी फोकस ऑन चाइना पॉजिटिव्स कि ये कर क्या सकता है, हम ये नहीं देख सकते हैं कि ये कर क्या नहीं कर सकता। दैट इज द होल आइडिया ऑफ दिस टॉक, कि इसके इसके प्रॉब्लम क्या है। क्या ऐसे कोई आदमी है, ही हैज एब्सोल्युटली एवरीथिंग ऑन हिज साइड एंड वी विल नॉट एनकाउंटर प्रॉब्लम्स। और ये स्टडी हमने किस लिए किया, कल के दिन अगर हमारे ऊपर आक्रमण किया तो इसको सॉर्ट आउट करना है। और मेरे को कोई डाउट नहीं है, इंडिया सॉर्ट आउट करेगा, जिस तरीके से 2020 में ईस्टर्न लद्दाख में इनको मुक्का लगा के 9 किलोमीटर पीछे चलाया। ओके, सो विल गेट बैक, राइट? या ओके, so see, Chinese general calls for quality weapons so PLA can win. That's what I said. This is not my reporting, this is from South China Morning Post. ये these are all facts I'm talking. देखिए, एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, जो भी मैं बात करता हूं वो सब फैक्ट्स है। जो भी स्लाइड है, दीज आर स्ट्रेट लिफ्ट्स फ्रॉम चाइनीज सोर्सेस। ये मेरा ख्वाब नहीं है। अगर आप चैलेंज करना चाहते हो तो चैलेंज कीजिए। ये भी मैं बताना चाहता हूँ, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट जो बोलता है इज एक्चुअली द सॉफ्टेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रूथ। इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल ट्रूथ माइट बी इवन वर्स। देखिए, ये रैंड का ब्लॉग है, कंट्रीज बाई डिफेक्टिव चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट, वाई। ओके, इट इज अ ह्यूज ब्लॉग। दे टॉकिंग सो मेनी ऑफ थिंग्स। उसमें नाइजीरिया का भी है, म्यांमार का भी प्रॉब्लम है, पाकिस्तान का भी है, सबका है, एक का नहीं है, बहुत है। और इसमें फिगर्स के साथ दिए हुए हैं, कितना खरीदारी हुआ है, कितना इनका, बांग्लादेश ने भी खरीदा इनका चाइनीज इक्विपमेंट, उनके 2 पनडुब्बियां लिया है और वो ऑफ रोड पड़े हैं। Pakistan's half of its air force is lying off road because it doesn't have spares, right? सस्ता बेच देते हैं, बाद में प्रॉब्लम है। ताइपाई टाइम्स हैज रिपोर्टेड PLA carriers unfit for war. This is not my report, it is their report. They stay 200 kilometers away from China. They should know best. Okay, ये देखिए, ये इनका जैंग यूजिया है, सॉरी, ही इज वे फेंगी, ही इज अ फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर। पिछले 2 महीने से ये लापता है, इनफैक्ट 2 महीने 3 महीने से लापता है। तो दैट्स व्हाई आई सेड दैट टू, अभी जो ली शांगफू और ये वे फेंगी, दोनों डिफेंस मिनिस्टर गायब। ओके, नो, ऑल दिस प्रॉब्लम्स आर देयर। इनका क्वालिटी के बारे में ये जो मैंने बोला था, दिस इज द थिंग अबाउट देयर क्वालिटी इन साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट व्हिच हैज कम लास्ट में। देखिए, 2-day मीटिंग after a month after a reshuffle of the PLA's rocket force, which saw at least 3 of its senior officers placed under investigation for in corruption. First line देखिए, called on military's procurement and technological development arms to improve the quality of our weaponry. ये इनके खुद के PLA के जनरल का कॉल है टू इन चाइना। अगर ये है सच, ये जो भी मैंने बोला मेरा ख्वाब नहीं है ये। ओके, द एक्चुअल सिचुएशन जैसे मैंने बोला, इट विल बी वर्स। और फिर ये General देखिए, Ravishankar, एक बड़ा, uh, या General Ravishankar, sorry, sir, can you go back to the previous slide, please? या No, no, आई go विल back to विल the. गो, Yeah, thank या you. आई One, विल one, गो। one, one small observation, sir. यहाँ पर I've been talking in Hindi. अब तक थोड़ा मैं अंग्रेजी में भी बात कर लेता हूँ. या See प्लीज what स्पीक इन is, इंग्लिश आल्सो। yeah. So this PLA rocket force is reshuffling. You know, there is a bigger story behind it. It is not corruption that these people were not happy about. Uncle Shi was not happy about. It is something else. What started happening was that in US, many US based think tanks started sorting out what exactly does the rocket force have? What are the weapons development phase? So Xi Jinping felt that perhaps there was a leak. How the heck did US based think tanks know so much about our rocket force?
I think that is the main reason, sir. I just wanted your input on the reality behind this. We don't know the reality, but it could be a leak, it could be anything. But the point is that it's been penetrated. See, the important point जो आपने बोला है, जो ये है कि when a rocket force top three chaps get changed and your defense minister gets changed, there's a huge compromise. That compromise could be corruption. That compromise could be, spying. It could be whatever. It could be a leak, whatever. Which means that, okay, first, your system is not foolproof. Second, you change your leadership and you not put a new leadership in place. And the leadership we put in for Rocket Force is from the Navy, who have never dealt with the Rocket Force. So it's a misfit. It is like asking a carpenter to do a plumber's job. As simple as that. So you have to, right? So all this is not my imagination. This is their reporting. I keep maintaining this. In my analysis of China, I don't analyze China from my viewpoint. I don't analyze China from what is written largely by Western literature. I analyze China from Chinese literature. Only that literature, the only thing if you've seen which is outside China, I took the RAND blog of data reported from other countries to RAND. So this is Chinese way what it is. You have to see, you have to put all these pieces together to understand what Chinese military is all about. Okay. Now look at this. China's military's top brass called to front lines for field research to fix rank and file problems. Because I've said the leaders are new, the men are new constantly. There's no communication in this organization. That is the thing which is given in this, report. Just think of an organization where the top man and the bottom man don't have communication. So these are the issues. When I say, okay, what does he say? He keeps summoning top brass to Beijing and says loyalty, loyalty, loyalty. The party must command the gun. So control over the gun is important for Xi Jinping. Whether the gun is effective or not is a question mark. ये गन जो है ना मेरे हिसाब से मिसफायर होगा जिस दिन चाहिए इनको. Okay? Of course, the anti-corruption investigators target top PLA rocket force generals. We know that. And यही मैंने बोला, ये जो नेवी का जनरल को लगा दिया इन्होंने as in charge of the rocket force. Okay? Right? ये तो चला ही गया. Chinese foreign minister भी गया, ये भी गया, इसका his predecessor also gone, Li Shangfu. Now though he's officially been taken out and there's no replacement. Today, other day, in the APEC conference, and when they meet between Xi Jinping and President Biden, it was decided that there'll be military to military talks. So Lloyd Austin has said, how can I talk? Whom do I talk to? There's no minister. When the minister comes, I'll talk. They don't have one. And it's now been almost 5 months. So there's a serious problem which we, many of us don't understand. Look, how about this? You were other day talking इसी के बारे में, Lin Biao. Yes. Lin Biao का क्या हुआ? Yeah. And Lin Biao is of Mao's time. He's worried. Xi Jinping is worried. In fact, after the BRICS meet in South Africa, he turned up in Xinjiang. And from there, he went by train to China. He didn't go by plane. Because ये Prigozhin का कहानी हो जाएगा इसका. Or he might meet the same fate as Lin Biao. So he's worried. Okay. So if I put the whole thing, China is attempting a modernized and world-class armed force in a hurry. There are massive defense outlays. There are costly high-tech equipment of low quality, lack of standards, and battle untested. There's an increased requirement of high-grade personal equipment for a long time, which they're not getting. So all your high-tech equipment is being manned by low-tech people who will spoil that thing. वही कहानी है.
that Ferrari will become Ferrari by two. Right? Low availability of personnel, poor leadership, low operability, high maintenance, low operational life, and high replacement costs. Whenever you replace an equipment, you're going to pay twice the cost. That's the normal standard. Okay, when you replace an old gun with a new gun, for example, the Indian field gun, which we normally produce in India, costs us, say, about 25 30 crores. When you put, sorry, 25 30 lakhs. But when you get a modern gun system, which people say, oh, get all modern gun systems, it costs anything upward of 15 to 20 crores. So the replacement cost of any old equipment with new equipment is very high. Then there's corruption. And last but not the least, there's going to be a disproportionate load on the economy. Can China afford it in an economy which is going down or stagnating? And again, that stagnation of this economy is not what I have said. It has come out first in Financial Times. In the last one, we spoke of it, where they have said the share of China's GDP to the world GDP has gone down relative to USA, India, Malaysia, Indonesia, and other developing countries. Right? So, can China afford this army which doesn't function, which is not giving? Again, let me qualify before I take on questions or we have a discussion. The PLA will remain a huge army. It is not going to collapse. China is not going to collapse. But what have we learned on all these 6 episodes? That China is not the power which we thought it was. We can handle China. India is a growing power. China has a lot of dead GDP, which is does not contribute to its power anymore. On the other hand, it will retract or redact from its power. One system is going up, the other system is coming down. You start handling it on equal footing. That is the message. And that was a message which I think President Biden has given to Xi Jinping in the recent meet. Okay, so there are a whole lot of issues. So this is what I had to say about China's military. Now we can take on any questions. We can talk of this thing and the overall power structure and everything. I'm open. Shri Ayarji, all yours. Yes, thank you so much, General Ravi Shankar. So, viewers, this is where we stand today. And what you're seeing is much of the stuff, the newer stuff that China has built, is finding its way through to the regions of conflict, whether it is Russia in the Russia-Ukraine conflict or Hamas slash anybody else, Houthis, Hezbollah, because everything is being sourced from Iran, and Iran itself gets it from China. So this is an established link. There's no two ways about it. Now, there are two things again. So there are some weapons that are effective today, but can they keep building more? Because US has completely cut off the umbilical cord to get the high-tech stuff. So what is going to happen because of that? That to me is a body blow to China that kind of limits them from doing a lot of things moving forward. I have a feeling that one step where they not only stopped getting high-tech equipment, semiconductor manufacturing equipment, but they also told all the people of United States origin or other countries to leave China. And they read the riot act to them. You better leave. That was the thing that was told. That, I think, is a huge step backwards for China. So they have too many problems, plus all these new outbreaks of flu, virus, whatever you want to call it. It is just a mess. I don't know. Xi Jinping probably has billions salted away. He should just be going and relaxing, having a cigar and looking at the sunrise and sunset in Hawaii. That's what I would do, sir. I'm just being joking, of course. They won't leave that's him okay. That's okay. alive for you. But look, 1 minute. See, you have to understand the Communist Party and its thinking and its ideology. That is why the second, circle of our whole journey was ideology. Ideology is important. Okay, their ideology and their thinking is important. They always want to be the best. They want to be the first.
They always feel that their system is the best and others are the worst. So it is that ideology which has driven China to where it is. And then there's this great, thing. Everything which goes up fast comes down fast, right? It's a True. Newtonian principle. You throw it, it'll go as high as you project it, but it'll come down faster. It's just following a law of nature. So I don't see any this thing. So any other point which you wanted to discuss in? I think that is it. I mean, there are lots of things for people to mull over, and you have to understand. Like I said at the beginning, you have to look at the entire series. We'll create a playlist in P Gurus. The first three we did not host with you, General Ravishankar, but that's okay. We'll create a playlist and put it so that somebody wants to watch the entire list. You can watch it one after the other, so you get the complete picture. Anyone studying about China, India doesn't have a lot of people who study China in depth. This is a great series that you can follow. Sir, we can take questions now, sir. Yeah. The first question is actually directed to you. IRG CM, PB Bhagwant Maan, Punjab CM Bhagwant Maan ki please दिल से प्रशंसा कर दो. So I don't know कर whether you सकता are हूं, a लेकिन किस बात पर मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं आ रहा है. देखिए, yeah, हमें किसी yeah. से दोस्ती या दुश्मनी नहीं है. क्या होना है, जनता को सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, एवरीबॉडी शुड डू बेटर. दैट्स ऑल देयर इज. अगर कोई अच्छी चीज करता है तो हम जरूर प्रशंसा करेंगे, लेकिन मुझे कंटेक्स्ट थोड़ा आप दिखा दें तो शायद इट विल बी हेल्पफुल. ओवर सर. Yeah, okay. Oh, Sai Karan says people keep saying China will fall from past 20 years, but that never happened. Why would it be different this time? I think people are underestimating China's technocracy. I think, Sai, you have got the whole context wrong. I am not saying China will fall. Did I say so? No. Never. Right? All I'm saying is China is stalling. That's all. I'm not underestimating Chinese technocracy. They've done tremendous. But they have not done that, which means that, the others are foolish or they have not done anything which is better than the others. If you take everything into consideration, the net sum is not great. That's the point. You have anything on this? आप बताइए. I'm good, sir. I'm good. Okay. Okay, this is a nice one. Akash says, militarily speaking, China has cut copy paste. Technology cannot be integrated into real-time military application due to uneducated and untrained personnel. Your views? Akash ji, cut copy paste is a nice way of putting it. The technology is fine. Uh, they don't have uneducated personnel, right? They have untrained personnel, and their educated personnel don't want to come into the army. That's the issue. Okay, that's the major issue which one has to take into thing. Okay, right. Okay, let me take this. I agree with all your views, but why is Bhutan cozying up to China and how will it impact our Siliguri corridor if Bhutan cedes Doklam to China? I think it is Uh, CEDES. I think it yeah, is that's okay. CEDES. See, Yeah. or gives up. Atresh, this will not happen for the simple reason we are allowing Bhutan to talk to China. And once Bhutan spoke to China, immediately the king of Bhutan came to India and had a chat with us, and we are clear as to what they are doing. So if you think China can get that Doklam, just forget it. It will not happen. I mean, I know with clarity that it will not happen. If that happens to happen, before that there might be a issue with the Bhutanese government, and we might take over some part of the land to offset it. So don't worry about it. We don't know. Okay, right. Uh, he's talking of Panun case. I don't want to talk about Panun case in Indo-US. We'll do it some other day. Okay. Right. Okay. He says, watch Gaurav Arya sir show today. Around 13,000 kids admitted to the hospital last week. Why? I don't know. So I really can't comment on it. Right. And but that there's a evolving situation there. So let us see where it comes, where it takes us. Okay. Right.
Okay. Jyoti Chaurasya says, what do you think about Chinese claim on their counter radar development? China also has high average. Their age is 40 and their waist size is also 40. Yeah, probably. Okay. But as far as their quantum radar development is concerned, quantum as a whole is in the initial stages, in the formative stages. So everyone is at the same level for quantum. So anyone who says no, no, China has developed quantum technology to develop a radar, I don't think it is there, right? And at the end of the day, the radar can't be quantum. The radar is still radio, signals going up and down. It's the computing which is quantum. Okay, quantum computing will enable you to detect or rather handle more targets. That's about all. But when it will come, we'll see. Okay. Uh, yeah, Magnet Ranga, his thing, an experienced Indian pilot in an old MiG aircraft downed a F-16 aircraft. Like General Saab says, high tech doesn't necessarily mean much. I agree with you completely. It does not. It's not only a matter of high tech doesn't mean much. They don't have that kind of high tech. Actually, you brought a major point. Pakistan in that Balakot exchange of next day. Do you know that they didn't use Chinese aircraft? They kept Chinese aircraft on the flanks. They used American aircraft, F-16s. The JFs were kept out. So that tells you something about the reliability and quality of those things, which we will have Well, to confront. it also drew US's attention to Pakistan. They are Yeah, not supposed to use F-16s to do any offensive measures, and then yes, everything is now more or less under the control. The keys are with the United States. yeah. Okay. Uh, General Shankar, how capable is India's air defense system to counter any aggression from neighboring countries? What are the strategic areas of strategic concern for India with reference to air defense systems? I don't think we have too many concerns, right? We don't have too many concerns because if China actually, if you see their air force plus their rocket systems are actually no match at high altitude, are no match for India at low altitude, operating out of low altitude. And with the S-400 coming in, the balance is completely in our favor, right? Air defense is not only about air defense missiles, it's also about your aircraft and your ability to fly. And China, which is operating off high altitude, doesn't have the capacities to fly. So don't worry about it. Pakistan, the lesser said, the better. So who's left? Really speaking, there's no one left. So I'm not too worried about it. By the time China gets its long range and PLI, RF to come into force and all that, the war would have to go to a very high level. I don't think that can happen. Okay, uh, Farkley, India's problem is integrating different equipment. कहीं के नहीं, this is not correct. This is ये आपका सोच बिल्कुल गलत है. India has been doing this ever since independence. We take equipment from many different sources and we have the capability to integrate it. All our new equipment which comes from different countries, we have one standard on platform on which they have to work. And this is something which we have been insisting on and been achieving it. So don't be under the impression just because we have a tank from Russia and we have our indigenous tank and a air defense system from somewhere else that we don't know how to integrate it. Don't think we are fools. Okay? Don't think we are fools. That's one thing. Underestimating ourselves is one of the things which Indians are good at. Okay. Yeah. Mandar Karnik, a long time. What's happening, guys? I should ask you what's happening, Mandar Karnik. I've not seen you. Yeah, Karnik, Mandar ji has this habit of staying active and then just goes underground for long periods of time and then he Yeah. surfaces I've again. not seen him. Yeah. Hope all is well, Mandar. Yeah, I hope so too. Then, of course, China cannot afford to go to war with any country in the current situation within their country. Yeah, I agree with you. In fact, this status has been there for quite some time.
The internal situation does not permit them to go for a war with any country. That's why they have not even ventured across the sea into Taiwan. Okay. I don't see any major question. Okay, let me take this. Good evening, sir. Given the insights into PLA's inner workings as outlined in your presentation, is the claim that China is opaque unfounded, or are the Chinese media source planted? Yeah, you have a point. Uh, the Chinese are opaque. There's no doubt about it. But what is coming out of China, if you collate the information and apply your common sense, you get a clear idea. And that is what many people didn't do. But now people are doing. That is why you find a lot of things coming out about China, right? Which gives the reality. Uh, yeah. What happens if South China Morning Post is deliberately understating China's military strength? It is not. The Chinese habit is to overstate its strength. Why would it understate its strength? Okay, so you are not you taking this psychologically. The Chinese refuse to believe that their economy is going down, isn't it? They say our economy is going up when it's actually going down. Same thing here. Okay, I think we finished with the whole story. I don't see any other great other thing. Okay, somewhere I saw one super. Let me take that. Yeah, Rohit. Good evening. How can one be successful in defense manufacturing if someone starts from scratch? Thanks for this session. Rohit, you have to just get into it. Sometime you have to start. Success in defense manufacturing, you have to stay the course. Right? You have to stay the course. Defense manufacturing all over the world is a slow process. Don't think the US defense manufacturing process is faster than an Indian. I've dealt with the US people. The time taken by them and the time taken by us is the same. But their decision loops are faster than our decision loops, and that's why we lose out. And if you want to get into the defense manufacturing process, get into it, right? And get into it any way you can, but be prepared for long times. Gestation periods are huge, but the good thing about the defense manufacturing process is if once you get into it, they'll not let you off unless you opt out of it. Okay, you have to break that glass ceiling on your own. And it depends on what you manufacture and what they're looking for. And invariably, if you can get into the loop of manufacturing what they want rather than what you have, you've broken the glass ceiling. Because their requirements invariably are something which is far different from the normal, and they are always looking into the new things, because to be a defense supplier or manufacturer for old things, they'll not come to you. They already have established people. So you have to break the glass ceiling through new equipment, new capabilities, and new requirements. Okay, I don't see any more. Kindly look into your question, Srinivasan. I don't see your question. Yeah, I don't see your question, Srinivasan. There's so many of them, I am not able to track it. Or you can, type it at the end. I'll go to the end and see. Yeah. Okay. And Zoo, whatever it is. He says, fantastic session, Shriyar and General Shankar. Salute, thanks a lot. Okay, Thank you, where's ZZZ. Srinivasan? His Yeah. ZZZ. Okay. Okay, right. Okay, this is one thing which I wanted. Good evening, sir. Do you think Tejas is a game changer for Indian Air Forces and economy? Definitely, it's there, right? There's no doubt about it. It is a game changer. It's going to change a lot of games. It might not be the best aircraft, but it's the most effective aircraft for the money which we're going to pay, and it meets all our requirements, right? Okay, yeah. Srinivasan says, will we overtake China in 5 years? Look, I'm not interested in whether we overtake China or not.
Let me be very honest. This is not a race. This is not a Ford versus Ferrari, you know, competition. India should be good for its people. When will India overtake China? When India can feed its poorest of the poor and make them prosperous to the extent of not looking for the meal, searching for the next meal. Then India has overtaken China. India will overtake China when India is considered as one of the good powers, a responsible power of this earth, which it is already heading. So our metrics to overtake China has to change. It is not a matter of GDP. It's not a matter of population. It is not a matter of military might and all that. It is a matter of how we treat our people. We have already overtaken China in form of democracy, or that matter, the way we treat our people. We have already overtaken China in the trust which it generates in the world, right? In the global south. Who trusts China? But everyone trusts India. So it is a matter of how you look at it. You don't need money to overtake China. Niyat chahiye, niyat. Yeah. I finished, General Sri Ayarji, your choice. Um, Viewers, this concludes our six-part series on the 100-year marathon of China. And General Ravi Shankar and I will be continuing to bring you more topics like this that are of interest to everyone. And here, I think we are planning to do a summary after this one of the total thing, and then we'll move on to some other series. But We'll also do, probably instead of a summary, Shreyarji, how about next time we do a global conflict scenario? yeah, Let's assess the sounds global good. conflicts and how it affects India. Sounds good. I Yes, think, sir. Yes, sir. right, because there's so much need, so much going on in Ukraine and Israel and Hamas and Pakistan and Myanmar and South China Sea, and I'll give you an overview of the whole lot and see what's happening and how does it affect India. We'll take that on. Yes, yes, yes. Yeah. Thank you so much, sir. Wonderful session. Oh, Wonderful welcome. session. Thanks a lot and good evening. And last but not the least, once again, I would request all of you to subscribe to Ganashot. Please subscribe to P Gurus and watch both channels alternately as per your choice. Because going further, I can tell you, I'm going to discuss the Myanmar situation in detail on P Gurus. 30th. Yeah. No, P Gurus will come later. 30th, I'm doing it with another general, Oh, right, right? right, 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 right. Okay, and because we work together, and with this thing, so we are doing it together. We're also going to do a seminar, or rather a joint discussion with 4 5 very good generals on Pakistan, because the situation which is evolving in Pakistan is worrisome. So you'll get a hang of it if you this thing and follow. I'm also trying to get General Atta Hasnain, who's a member of the National Disaster Management Authority, to speak about disasters and especially about the Uttarakhand tunnel. Maybe we'll actually be able to do it at 7 o'clock today, but he got called by the PMO, so he had to go there, and then I postponed it. Maybe if all goes well on 29th, we'll get there. So anything else you have to say, Sri Ayarji? So next Monday, same time, we are coming Yeah. back together, and we'll be having something to discuss. So it could be what we just talked about. Or Global with a wrap conflicts up and of this, and then we'll do that also. yeah, 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 yeah. Yes, sir. Okay Yeah, then. we'll do both. Right. Thanks a lot. Good evening and Jai Hind and Vanakkam. Namaskar. Namaskar and Vanakkam.